morning, friends. Hello, I am SeemaSrivastava. So today we are going to study chapter 5, the fundamental unit of life of class 9th. So in previous class, a quick recap. In previous class, we studied about Robert Hooke, the cell discovery, different shapes of cell on the basis of their size and number. So today we are going to take this chapter 5 and we will start with cell organelles. Now, what are cell organelles? Suppose, see students, you have to organize a party. Party हम organize करते हैं. Suppose there is a birthday party. Then there are certain members of family who are going to organize the party. So you will give certain tasks to each member of the family. For example, किसी को हम कह देते हैं edibles arrange करेगा. किसी को हम कह देते हैं they will do the work of decoration. इसी तरह कुछ किसी को कह देते हैं someone will welcome the guests. So इस तरह से there is a division of labor of work. उसी तरह cell में there are certain specific organs of certain parts which do a specific function, and these cell parts are known as cell organelles. Now we will see what is written here. Division of labor is seen within single cell. In fact, each such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. Each kind of cell organelle performs a specific function such as making new materials in the cell, clearing up waste material from the cell, and so on. तो सेल में कई फंक्शंस होते हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ प्रोटीन. सेल में वेस्ट बहुत सारा होता है, उसे रिमूव करना होता है, सेल का डिवीजन करना होता है. तो इस तरह से कई प्रोसेस होते हैं सेल में. तो सबको हर सेल ऑर्गेनेल को ये फंक्शन डिवाइड कर दिया जाता है, सबको दे दिया जाता है. अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शंस बिकॉज of these organelles. So cell is a living part of body. So there are various cell organelles in the body like cell membrane, plasma or it is also known as plasma membrane, cell wall, cytoplasm, nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosome, mitochondria, plastids and vacuoles. इसके अलावा भी कई सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, बट दीज आर मेजर सेल ऑर्गेनेल्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड साइटोप्लाज्म. सो वी विल स्टार्ट विद सेल मेम्ब्रेन. So this is an overview of animal cell. You can see the cell organelles like nucleus, nucleolus. Each of these we will study in detail, but we will today start with cell membrane. Now what is a cell membrane? It is the outermost covering of cell. Now see, this is a cell. This is the outermost boundary. So this outermost boundary of cell which separates external environment of cell from the internal environment of cell is known as cell membrane. अब सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. Now what it does, it separates contents of the cell from its external environment. ये हमने already पढ़ लिया. Now cell is selectively permeable membrane and semi-permeable membrane. What is the meaning of selectively permeable membrane? अब ये सेल है, it is a living part of body. So यहाँ पे कुछ exchange of material होता रहता है. So it allows only certain particles to go inside or outside. So it is a selectively permeable membrane. It selects only certain particles to move across it. Hence it is called selectively permeable membrane. Now what is it made up of? It is made up of phospholipids or lipid bilayer and proteins. If somebody asks you what is cell membrane made up of, first you will write lipid and second you will write
protein. Lipid is a phospholipid and it comprises of two layers. Now we will see the structure in detail. Now see here, there are two layers. This is hydrophilic. I'm sure you must be knowing what is philic. Philic means loving. So it is water loving layer. And this is hydrophobic, means water repellent layer. So external of the cell, that is extracellular fluid, there must be water or extracellular fluid. So water loving end is towards the extracellular fluid and towards the intracellular fluid. And hydrophobic end is in between. You can see here, these two are hydrophobic tails and these two are hydrophilic ends. So this is a phospholipid bilayer. So मैंने इसमें प्रोटीन को शो नहीं किया है, लेकिन इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. कुछ प्रोटीन्स बहुत बड़े होते हैं साइज में, जो पूरा क्रॉस कर जाते हैं पूरी सेल मेम्ब्रेन को, और कुछ बहुत छोटे होते हैं जो ये या इस साइड दिखाई देंगे या फिर इस साइड दिखाई देंगे. दीज आर प्रोटीन्स. So this was about the structure of cell membrane. Now there is a diffusion of, there are certain processes which take place like diffusion or osmosis. ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, और बहुत से पार्टिकल्स इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करते हैं, जैसे प्रोटीन बॉडीज होती हैं. इसमें ऑस्मोसिस भी होता है. एंड this movement process obeys the law of diffusion. Law of diffusion का मतलब है there is a movement of particles from higher concentration to lower concentration. This is law of diffusion. And diffusion doesn't require energy because there is a movement of particles from higher concentration to lower concentration, and movement takes place until the condition of equilibrium. But it is not necessary that only diffusion will take place. There can be the process of osmosis also. Osmosis is movement of solvent particles. Now we will see these processes in detail in next slide. Now see, there are three kinds of solution: hypertonic, isotonic and hypotonic. Hyper means high. What is high in the hypotonic solution? In hypertonic solution, solute particles are in higher concentration and solvent are in lower concentration. If we talk about isotonic solution, solute as well as solvent, both are in equal concentration inside the cell as well as outside the cell. And if we talk about hypotonic solution, hypo means low. What is low? Solute concentration is low and solvent concentration is high. Okay, now we have taken a red blood cell, RBC. Now this cell is placed in a hypertonic solution. Firstly, we place it in a hypertonic solution. That means
solute concentration is high outside the cell. Here solute concentration is high. Inside solute concentration is less. Parallelly, solvent solution, if we talk about solvent solution, outside solvent solution will be less. So there will be the process of osmosis. Before we come to know what is going to happen, we must know what is the difference between diffusion and osmosis. First thing is that diffusion is movement of particles. It can be solute, it can be solvent, from higher to low concentration. Similarly, osmosis is movement of solvent from higher concentration to lower concentration. Second point of difference is it does not require semi-permeable membrane. But if we talk about osmosis, it requires semi-permeable membrane. अब हमें ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के बीच में डिफरेंस पता चल गया है. तो आप बताइए, यहाँ पे आरबीसी है, इसका ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा कि ऑस्मोसिस होगा? यस, हियर ऑस्मोसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस बिकॉज देयर इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. And direction of flow of solvent will be from inside to outside. Solvent will move from inside the cell towards the outside. So, due to movement of solvent from inside to outside, the cell will shrink. This process is also known as exosmosis. Due to exosmosis, there will be shrinking of cell, which is known as plasmolysis. ये जो छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं जैसे एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, आपको इनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए और क्या होता है ये अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, आपको ये याद करना है. इसके बाद हमने फर्स्ट कंडीशन में तो देख लिया कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में अगर सेल को प्लेस करते हैं तो वो श्रिंक कर जाता है. अब सेकंड कंडीशन है आइसोटोनिक. आइसोटोनिक को हम लास्ट में लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हाइपोटोनिक. हाइपोटोनिक का मतलब है सॉल्यूट कंसंट्रेशन आउटसाइड कैसा होगा? कम होगा और अंदर ज्यादा होगा. एंड पैरेलली सॉल्वेंट के लिए हमने क्या कहा था? बाहर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और अंदर कम होगा. तो ये बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है. सेल से कंपैरिजन में बाहर सॉल्वेंट कंसंट्रेशन ज्यादा है. तो ऑब्वियसली सेल के बाहर सॉल्वेंट ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में है, तो देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल. हम एक रियल लाइफ से एग्जांपल लेते हैं. अगर आपके पास रेजिन है, रेजिन इसका मतलब होता है किशमिश, उसको आप पानी में डिप कर देते हो तो अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है सोल्यूट कंसंट्रेशन और बाहर का कम है. बट सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है. तो बाहर से मूवमेंट क्या होगा? वाटर का, किशमिश के अंदर वाटर भर जाएगा तो वो इस तरह से स्वेल कर जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज
एंडोस्मोसिस। एक्सो मतलब एक्सो बाहर जा रहा है वाटर, और एंडो मतलब इनसाइड जा रहा है। इससे क्या हो जाएगा, सेल टर्जिड, और इसे हम सोलन भी कह सकते हैं। अब थर्ड कंडीशन है हमारी आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कंसंट्रेशन सेल के अंदर और बाहर दोनों इक्वल है। अब आप बताओ, क्या देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड और आउटसाइड टू इनसाइड? यस, देयर विल बी मूवमेंट ऑफ solvent from inside to outside as well as outside to inside. But here, net flow of solvent will be 0. Therefore, there will be no change in cell साइज। यहां हम देख सकते हैं कि जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द साइज ऑफ सेल। दिस इज अ नॉर्मल सेल, देयर इज नो चेंज इन साइज। सो दिस वाज द रिएक्शन ऑफ सेल व्हेन वी पुट इट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हाइपर में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, हाइपो में सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम होता है, एंड पैरेलली सॉल्वेंट उसका जस्ट अपोजिट होता है। आइसोटोनिक में दोनों इक्वल होते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज अ सेल वॉल। नाउ सी, दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। दिस इज सेल वॉल। This cell membrane is metabolically inactive and it is present only in plants, fungi and bacteria. It is absent in animal cell. ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, जैसे प्लांट्स, फंगाई और बैक्टीरिया। इसका कंपोजिशन अलग होता है अलग ऑर्गेनिजम्स में। सो वी विल जस्ट स्टडी प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल। प्लांट्स में प्राइमरी कंपोनेंट होता है सेल वॉल का सेल्यूलोज, फंगाई में होता है काइटिन, और बैक्टीरिया में होता है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन इज शुगर प्लस अमाइनो acids. Now what is the function of cell wall? सबसे पहले ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा है कि प्लांट्स हर मौसम को टॉलरेट कर लेते हैं, दे आर एबल टू टॉलरेट एवरी काइंड ऑफ सीजन। सो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ रिजिड आउटर कवरिंग outside the cell membrane, that is cell wall. So cell wall protects the cell. It controls and regulates direction of cell growth. It provides strength, structural support and maintaining shape. इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे ये सेल वॉल है और इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल में अगर प्लाज्मोलिसिस प्रोसेस होता है, एक्सोस्मोसिस प्रोसेस होता है, तो सॉल्वेंट बाहर की तरफ मूव करेगा, तो सेल क्या होगा? श्रिंक कर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक कर जाएगी। लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल will remain intact. So here it is able to maintain the shape of cell. Shape of cell is maintained. It functions as storage unit of storing carbohydrates for use in plant growth, especially in seeds.
It allows entry of smaller molecules through it freely. This was about cell wall. Now we are going to study what is cytoplasm. यहाँ मैंने एक ब्लैंक स्लाइड ली है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए. सबसे पहले व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म. Before we know cytoplasm, we should know what is protoplasm. It is living matter of cell which contains cell organelles. अब एक सेल लेते हैं हम. दिस इज एन एनिमल सेल. एनिमल सेल है तो दिस विल बी अ सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर बहुत सारा फ्लूइड होता है. This fluid is known as cytoplasm. Cytoplasm. But inside a cell, there is also one more structure known as nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ये क्या भरा हुआ है? न्यूक्लियोप्लाज्म. अब हम एक फॉर्मूला लिखेंगे. प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस. अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म. यहां फिगर में हमें ये जो येलो कलर का दिख रहा है फ्लूइड, जिसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं एम्बेडेड, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म. और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म. ये फॉर्मूला आपको याद करना है क्योंकि बहुत बड़ी क्लासेस में भी बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, व्हाट इज साइटोप्लाज्म. यहां मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया है कि प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग मैटर which comprises of cytoplasm and nucleus. और प्रोटोप्लाज्म में से अगर हम न्यूक्लियस को निकाल देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? साइटोप्लाज्म. Now, a quick recap of what we studied in today's class. Plasma membrane is flexible and made up of organic molecules, lipid and proteins. Plasma membrane is made up of lipids and proteins. Cell wall is present in plants, fungi and bacteria but absent in animal cells. अगर कभी भी पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, तो सबसे पहला पॉइंट आता है सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल. नाउ देयर इज अ टाइम फॉर क्वेश्चन, सो वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस. Who coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल. रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस. रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था कि ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सो ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी. तो एक ही ऑप्शन बचता है पुरकिंजे. सो आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो, मैंने एक ट्रिक बनाई है. P फॉर पुरकिंजे and P for protoplasm.
Protoplasm was the term protoplasm was coined by Purkinje. Now second question, who discovered nucleus? इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया. Robert Brown was the person who discovered nucleus. So with this we are going to end the class, and the remaining cell organelles like nucleus, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosome, mitochondria, plastids and vacuoles we will study in next class. So till then, enjoy the class.